हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू S2S क्लासेस। आज हम क्लास 10th के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी चैप्टर 5 इज़ गोइंग ऑन। इसमें हमने nth टर्म एंड exercise 5.1 all questions has been done, and forward exercise 5.2 also 18 questions done of 5.2 in the last lectures. How much done? 6 lectures done. It is the 7th lecture on this chapter. Okay, 7th, and question 19 and 20, two questions are left in the exercise 5.2. So these two questions we have to discuss today, and after that we have to go forward sum of first n terms of an AP. This formula we have to discuss, we have to find out, we have to prove it, okay, and then everything in the sum of n term formula I will tell what are the general things in this formula. Okay, now come on the point. Exercise 5.2 question number 19. So what is that? Question number 19. Question number 19 is from NCERT book. Subha Rao, NCERT book. Subha Rao started work in 1995. Okay, 1995 at an annual salary of rupees 5,000. So annual salary 5,000 in the 1995. 5,000. Okay, and then in 1995, it is in 1995, this salary started year. Okay, this amount in rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. Increment each year 200 after 1 year. Then in 1996, it will be 5,200 in second year. Okay, 5,200, and then next in 1997 that salary will be 5,200 more, add here 5,400. So like this salary is increasing by the same increment 200 every year. So this will be AP. Okay, amount of the salary will form an AP because difference same in the continuous two terms. Okay, after that what asking? In which year did his income reach rupees 7,000? तो कहीं पर इसकी 7,000 किस ईयर में हो जाएगी? ओके, तो लेट ये n टर्म है। फर्स्ट टर्म 1995, ठीक है, फर्स्ट टर्म, एंड सेकेंड टर्म 1996, वन ऐड किया आफ्टर 1 ईयर। ओके, आफ्टर 1 ईयर सेकेंड टर्म। ओके, एन टर्म आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 1 more. If n term n plus 1 year, because first term is the starting salary, then after 1995 96 1 year ऐड किया, 95 plus 1 96, तो आफ्टर 1 ईयर कितनी बन गई सैलरी?
second term, after 1 year second term, after 2 year third term. So after n years, that one term more, n plus 1 term. Okay, after n year, 1 n plus 1 term. So this n value will come. So after how many years? That 1 less than that n. So let nth term is equal to this last term 7,000. Okay, now solve this. Then by the formula an means 7,000 is equal to a is 5,000, a plus n minus 1 into d. D is 200. Okay, increment every year 200, difference is 200 into 200. Now simplify this. 7,000 equal 5,000 plus 200 and minus 200. Okay, now simplify 5,000 minus 200, 4,800. So then this will be 200 and plus 4,800. Okay, 200 subtract from 5,000. So 5,000 minus 200, 4,800. Okay, now that number will come this side. Then it means this implies 200 and will be equal to this minus 4,800. So 2,200. So 2,200, and then this implies n equal, this will go in divide, 200 will go in divide, then 2,200 divided by 200, 11, then in 11. So then how many terms these? 11 term, 1, 2, 3, 11 term. So 1 year, 1995. So second term, 1 add in 1995. Second term, third term, 2 add, यानी एक कम ऐड किया गया है किससे? नंबर ऑफ टर्म से. तो ये जो है ये 11 टर्म है, तो कितना ऐड किया जाएगा? 10. तो इन 1995 में 10 ऐड होगा, दैट विल बी ईयर. सो in 1995 plus 10 in this year, देखो एक साल में उसका इंक्रीमेंट लग के इतना हो गया, सेकेंड टर्म बनी इन 1996. तो 95 में 1 ईयर ऐड हुआ, तो जो टर्म है वो 11 है लास्ट. तो 11 टर्म है, बट ये 10 साल बाद, यानी इसमें 10 साल के बाद. तो 1995 प्लस 10 इतने ईयर्स. इन दिस ईयर सैलरी will be 7,000 rupees. So answer this. So this implies required year equal
1995 प्लस 10 तो 5 ऐड किया 2000 तो 2005 19 की जगह 2005 यानी 2005 1995 प्लस 5 देन हो गया कितना 2000 प्लस 5 2005 तो रिक्वायर्ड ईयर दिस आंसर तो इन 2005 सैलरी विल बी 7000 क्लियर दिस ये पॉइंट था इसमें 11 आया इनकी वैल्यू तो 11 टर्म है तो उससे एक कम ऐड होगा क्योंकि सेकंड टर्म के लिए 1 ऐड हुआ थर्ड टर्म के लिए 2 ऐड हुआ ओके तो 11 टर्म के लिए 10 ऐड होगा देन ओके क्लियर दिस नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट हेयर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम NCERT book okay what is question 20 okay question number 20 see it is Ramkali saved rupees 5 in the first week Ramkali saved rupees 5 in first week okay पहले वीक में 5 रुपया सेव किया उसने ठीक है ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग उसने इंक्रीज करी फिर सेकेंड वीक में उसने क्या किया हुआ कितनी इंक्रीज करी ₹1.75 ओके इंक्रीज हर वीकली सेविंग इंक्रीज करती रही वो जितनी वीकली थे उसमें ये ऐड होता रहा इफ़ इन द nth वीक हर वीकली nth वीक में फर्स्ट वीक फर्स्ट हो गया सेकेंड वीक में सेकेंड हो गया तो इन फर्स्ट वीक सैलरी क्वेश्चन नंबर 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट वीक सैलरी ओके फर्स्ट वीक सैलरी हाउ मच वाज देयर सैलरी नॉट सेविंग फिर सेकेंड वीक में उसमें ऐड किया उसने वीकली सेकेंड वीक 5 रुपीज़ में 1.75 ऐड हो गया ओके दिस रुपीज़ थर्ड वीक में ओके फर्स्ट वीक में इतना सेविंग किया सेकेंड वीक सेविंग थर्ड वीक सेविंग ऐड मोर तो हियर 5 on 6.75 add again 1.75 then it will be 5 5 10 carry 1 14 1 15 carry 1 then 8 तो 8 रुपीज़ 50 पैसा तो सेविंग थर्ड डे फॉर द nth वीक में उसकी सैलरी सेविंग उसकी 20.75 है 20.75 इन nth वीक ओके देन दिस है तो n की वैल्यू बताओ ठीक है तो लेट nth टर्म दीज आर फर्स्ट टर्म फर्स्ट वीक सेकेंड वीक सेम थिंग so an solution it is AP okay with A equal 5 and B equal 1 point how much rupees increase in per week 1.75 तो 1.75
Okay, now this an is equal to here last term nth term given 20.75 given. Okay, according to this given we can find the value of n. Now a plus formula a plus n minus 1 into d is equal to 20.75. Then simplify. A value is how much? A 5. Then put here 5. Then 5 plus n minus 1 into d. D is 1.75. Then 1.75 multiplied by 1.75 is equal to 20.75. Okay, now simplify, multiply by 1.75 inside, then 5 and this minus 1.75. Okay, and plus 1.75 into n is equal to 20.75. Okay, after that numbers simplify. So 3.25 will go that side, then 1.75 n will be equal to, this will be 3.25, subtract 3.25 from 20.75, subtract 3.25. Okay, now subtract, what will come? Then 5 minus 5 0, 7 minus 2 5, decimal, then 20 minus 3 17 point this. Okay, now this, then n will be equal to, divide by 1.75, 17.50 divided by 1.75, decimal removed. Okay, clear? Then 10, same place decimal removed, then it is 10. So n is equal to 10. It means in how much week? In how much week? In which week? 10th week. Answer required 10th week. This first week, then it is 10th week. In which week? In 10th week. Saving weekly will be 20.75 rupees. Answer now done. Now okay, next. Now after this, what we have to do? Now sum of first n term of an AP. Okay, so we should write the general and then make the formula. Okay, understand this. Sum of n term. Okay, sum of n term represented by Sn. Sum of first n term. Okay, what are the term of AP? A, general form, A plus D, second term, plus third term A plus 2D. Okay, then plus and so on, and the last term is A plus n minus 1 into D. This is the last term, nth term. How many these terms? N term. 1, 2, 3, 4, 5, and this is nth term. So n term are there. Now S, sum of n term, S, that is S.
दैट इट इज एस, सेम होगा क्योंकि एन टर्म सेम। इसको रिपीट कर दो, रिवर्स प्रोसेस। हाउ? लास्ट टर्म रिटर्न बिलो द फर्स्ट टर्म, a plus n minus 1 into d. Last term add with first term plus second last. Second last what will be? N minus 1th term will be a plus n minus 1th term. Here लास्ट से सेकेंड टर्म, वो एन टर्म है, ये एन एथ टर्म है, एन माइनस वन हो गया, तो ये एन माइनस वन टर्म है, तो ए प्लस एन माइनस टू डी। दिस इज द सेकेंड लास्ट रिटर्न एट सेकेंड एंड सो ऑन, एंड देन लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, a plus d, second term is the second last, and then plus a, first term is the last term. Now add like this, adding. Understand this thing? Understand? First term adding with this last term written as below the first. Add, so what will come? Addition. A plus a plus n minus 1 into d. So it is 2s. S plus s, 2s is equal to a plus n minus 1 into d. Then 2a plus n minus 1 into d. Understand? This is sum of first term. Sum of second term a plus d and a plus n minus 2 into d. तो ध्यान दें, a प्लस ए लाइक टर्म ऐड होगी, 2a, ओके, 2a प्लस 1d एंड प्लस n माइनस 2d, तो n माइनस 2d प्लस 1d, d कॉमन, देन n माइनस 2 प्लस 1, n माइनस 2 प्लस 1, देन n माइनस 1, so this will be plus n minus 1 into d, okay, plus add third term with the third, so then also will come same, what, 2a plus and so on, and then last term, second last with second last means second last, a plus n minus 1 into d with a plus d, same thing. So same will come, 2a plus n minus 1 into d, and plus last term with plus a, first term a. So add this is also 2a plus n minus 1 into d. So here you check how many these sum of n term. So what will be sum of n terms? N term will come. So n term, these are n term. How many these? N terms. N terms sum. ओके, ये n टर्म हैं और सेम है, सेम फर्स्ट टर्म 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सेकेंड 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, थर्ड अगेन 2a माइनस 1 इंटू डी, एंड लास्ट सेकेंड लास्ट सेम। तो ये कितनी टर्म है? सेम टर्म एडिंग n टाइम, सेम टर्म एडिंग n टाइम, जैसे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 n टाइम्स। तो व्हाट विल कम? n टाइम ऐड कर रहे हैं, 5 प्लस 5 2 टाइम्स ऐड करते हैं तो 5 2 जा 10, 3 टाइम्स 5 प्लस 5 प्लस 5 15, देन 5 3 जा 15, तो हाउ मेनी टाइम्स? मल्टीप्लाई दैट, देन 5 into n, so this will be 5n, 5 same number adding n time, that will be number into how many times, यानी 5n. So this is the general concept. Keep in your mind, any same number adding n time then 5 into n. Okay, so here same number, what is same number?
2a plus n minus 1 into d. This same number adding n time, then it means this sum will be equal to n into this. So n into this 2a plus n minus 1 into d. This, okay, clear? Because n time, so n se multiply, same number adding n time, then n into that number. Okay, then this 2 will go in divide, then s will be equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into t. This is your formula of sum of n term. Remember this sum of n term, or we can write this. What we can write? N by 2. 2a, what we can write? A plus a. So a plus n minus 1 into d. So a plus n minus 1 into d is called the nth term, an. So a plus an, we can write this one formula, a plus an, nth term बन गई. ठीक है? This or this an is equal to last term L. So we can say n by 2 bracket a plus L. What is L? L is called the last term, and last term means L is an, nth term. Okay, and that is equal to a plus n minus 1 into d. So we can use directly, okay, L here, a plus L. If last term, nth term given, then L, that is L, and first term. So n by 2 bracket a plus L. Remember this formula directly we can use. This is most important. L is called the last term here. Now watch, take interest, and like, share, and subscribe the channel to get notification, and शेयर द वीडियो अपने मित्रों को, अपने कांटेक्ट को, सभी को भेजें और सबको उसका बेनिफिट हो. ये मेरा एक आपसे विनम्र निवेदन है कि जितने भी कांटेक्ट है सभी को भेजें. कोई ना कोई, कहीं ना कहीं किसी को ही वो वीडियो ओपन करने को मिल जाएगी, तो वो उसको लाभ होगा. ओके, एंड सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू राइट योर फीडबैक. फीडबैक ज़रूरी है वीडियो के लिए. फीडबैक मीन्स कैसा वीडियो लगा, क्या आपने उसमें पाया, क्या आपको समझ में आया, नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, वो फीडबैक मुझे आए तो मैं कोशिश करूँगा कि वो फीडबैक आपकी रिमूव करूँ. जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें उसको मैं हटाऊँ, फीडबैक को मैं फॉलो करूँ. ओके, तो राइट इन कमेंट बॉक्स योर कमेंट, योर फीडबैक. थैंक यू.